Good evening, all. So let's start today's session. I will share my screen. So let me know once you see the screen. Yes, son. Okay. Yes. So let's open Revit window. Yes. So you can see here your previous open window Revit file preview here. So you can just click on this preview and open your file, or you can just click here open and just go to the your respective folder location and just open the file. Okay, so in morning we saw how to add this floor slab, right? Floor slab, then slab edge also we saw how to add the slab edge. Then yes, so next see we will see here slab. Okay, so the difference between, I will show you the difference. Okay, so what I do, I will just draw here on ground floor and just add here structural floor with 500 thick slab, and just add here and just consider this is 8 meter by 8 meter. Okay, and finish. Right, so this is, if I select this, so you can see this is the floor, right? Generic floor, right? And I will just add again, go to the structural tab, and this time I will use this structural foundation slab. Okay, so if you go here and you need to create 500 thick slab, so go to duplicate and I will add here 500 thick slab and click here 500. Okay, and this process is same for this floor slab, so you can use this option and just add here. So this slab is also 8 meter, and this side is also 8 meter by given dimension, just 8 meter, right? And this is our foundation slab. So if I click, so you can see this is the structural foundation slab and this is floor slab. Okay, so difference is, if you want to add a slab without slope, means for example I want to add the foundation slab, means some raft for the foundation, so I will use this option. And if I want to add floor, normal floor, so you can use this option floor. Okay, so these are the difference. So and suppose if you want to add some sump here at the corner, okay, so you can give the slope also. So those option you will be see in only floor category, not foundation slab. Okay, so how to add the slope I will show you. Just consider here is a small sump here, right? So I will add one sump here. So if you look at in 3D view, so these are our slab. Okay, so just consider I want to give the slope. So this point is higher elevation, higher level, and this is lower elevation. So you can define the slope. Okay, so how to define? If you go to the plan, so if I select this, right, so you can see this is the floor slab. And if I select, so first option is edit boundary. So you, by using this option, you can edit this boundary. If you want to change the dimension, you can go with that edit boundary. And another is here slope, modify the sub element and add points. So with the help of these points, you can give the slope here. So how to give the slope? So you need to select this. Okay, and you can just click here. Yes, so once you select, so this modify floor tab active here. Okay, and you need to click here, modify sub element. So if you click, so you can see there are the 4 points.
right? So if I select this point, so you can see this is the zero value, and this is also zero value, right? And suppose I want to give the 50 slope, so this is my higher point and this is my lower point. So you can give the slope here, so you need to select and you can add here minus 50, right? So this point is 0, this is higher point and this is lower point. I want to give the minus 50 slope, and you can just add also here minus 50, right? And just escape, right? So you, if you see, okay, I want to add one section here, so we can see the slope here. सर सर वो स्टेप पता नहीं चल रहा है क्या? सर थोड़ा हेलो, हेलो हाँ, सर स्टेप पता नहीं चल रहा, थोड़ा धीरे धीरे कहिए ना, फास्ट जा ओके रहा है। ओके ओके, मैं रिपीट करता हूँ. Okay, so okay, so if I select this, so this is our floor, right? And I will just show you in paint. Okay, so this is my slab, right? And I want to give the slope from this direction. Okay, so because here is some drainage or drainage gutter line, or you can just drainage here, and I want to give the slope. Okay, so this level is my 0.00 and this is my point minus 50. If I cut section, right, in this direction, so it looks like, so it's like that. Okay, so this level is 0 and this is minus 50 and I want to give a slope. So if you want to model the slab with the slopes, you can use this floor option, right? So just select this, so you can see that there are the 4 points here, right? So you need to click here, modify the sub element, right? And after that you need to see here, here is a 0, here also 0, and here, so you can just give your values. Suppose I want to give minus 50 and this is also minus 50, right? And then after that you need to click here, modify or escape. So I have given the slope here. So if you want to check in section, so you can just add the section and minimize your section range, right? And if I go to the section view, so you can see, right? So we have given the slope. So if I go to the annotate, and we have option here, spot elevation. Okay, so this is my 0 level and this is my minus 50 right? So if you want to annotate the slope, go to again annotate tab and you have option here, slope. So this is minus, sorry, 0.40 degree slope, like that. Okay, so सर स्टेप पता नहीं चल रहा, वो आप जब उधर क्लिक कर रहे थे इधर दिक्कत हो रही, नहीं पता चल रहा, सीधे कमांड दिखा दे रहा 40 डिग्री तो 40 डिग्री, आप अगर वहां क्लिक करें तो दिख नहीं रहा स्टेप आपका। कौन सा स्टेप नहीं, ये पता चला आपको पॉइंट्स कैसे ऐड करेंगे? नहीं सर, वहां से भी तो स्टेप गायब हो जा रहा, नहीं हो पा रहा है। ओके, okay, so okay, so if you model the slab with the slope, so then you need to go with that structural floor slab. So I have added this 8 meter by 8 meter slab and I want to give the slope in this direction. So this is my higher point and this is my lower point. So I have calculate minus 50 needs to give the minus 50 slope here. So if I take a section, right, and if I go to the section, right, so this is your slope, this is your slab. Okay, if I give the annotation, if I check the spot elevation, so you need to go in annotate tab and click here spot elevation,
So if I give here, so this is 0 and this is also 0. I want to give the slope in this direction. Okay, so how to add? You need to go in plan, right? And just select, right? And you need to go here. Once you select this slab, so this modified toolbar will be active here. Okay, so you need to go here, modify sub element, right? And you need to check here. So this is my 0 point, 0 level point, and I want to give -50, -100, -200. As per your requirement, you can give. And suppose I will give here inputs -100 mm, right? So this part is above this part by 100 mm, and I will just add -100 mm, right? And escape, or you can just click here, modify. So you will be exit your command. If you go to the section, so you can see your slab looks like, because we have given the slope here. If you want to check the elevation, you need to go annotate and click here spot elevation, and you can check here. So this is -100, right? So if I select, so you can see the top of the slab and bottom of slab is parallel to each other. Okay, so your base is also with slope, right? We have option here. If you don't want to give slope at the bottom, so the bottom is your straight here, horizontal, right? And you need to just add a slope at the top, like that. So you have option. Okay, so in that case, I want to horizontal. I want to just horizontal this bottom of the slab. So what will do? You need to select this slab, go to the edit type, and we have option in edit. Go to the edit, and here structural material. Okay, and then after that variable. Okay, so we have untick this variable. That's the reason bottom and top will be parallel to each other. But if I want to straight the bottom of the slab, so you need to just click here variable and click here OK and apply and OK. So you can see your bottom edge of this slab is flat here, right? So we can give the slope only at the top. So you have option. If you want to give the slope top and bottom, so just click here, go to the edit type, and go to the edit tab again, and just untick this option, variable option, and click here OK, apply and OK. So you can see the same slope apply at the bottom of the slab also, right? So purpose of the this share both the slab category. If I select this foundation slab, so I can't get any slope criteria here. Okay, if I select this, so I can get here modify floor and modify sub element. Okay, so on the basis of that, I can add this given the slope. For example, I will just add again structural, floor slab, and structural. Okay, so this time I will just add a irregular shape like that. Okay, so this is my slab, and suppose I want to give the slope any location, means this location, or this is your higher point. Okay, you can, as per your requirement, if your sump at this side, okay, at this corner, so you can give the slope at this corner. How to give? Just select here, right, and just go to here modify sub element, right? So if you check, this is 0, this is also 0, this is 0, this is 0, and I want to give the slope here. So just select, and I want to give here -200. So just consider this point is below 200, right? And escape. And if you go to the modify, and if you check in 3D view, so you can see we have given the slope here, right? But if you want to give some, add some point, guys, just hold a minute. I will just close this door.
Okay, so if I select this and if I want to give the slope here also, where? एक्सक्यूज मी सर। Yes, सर ये एक्चुअल में जो आप बता रहे हो सर वो लैग हो रहा है सर, मतलब लैग हो रहा है। सर जैसे आप जो बोल रहे हो सर और जो मतलब इसमें जो स्टेप्स आ रहे हैं वो मतलब थोड़ा पीछे चल रहे हैं और जो आप बोल रहे हो वो आगे हो रहा है सर, मतलब हाँ क्या, और धीरे धीरे बताओ क्या? एक्चुअल में सर जो आप मतलब जैसे स्टेप बता रहे हो ना और वही चीज जो स्क्रीन पे आप जैसे क्लिक कर रहे हो तो हम्म, वो जो क्लिक वगैरह जो भी आप स्टेप्स बता रहे हो थोड़ा लैग कर रहे हैं बोलने के उससे। हम्म, अच्छा वो सुबह वाली प्रॉब्लम हो गई फिर वो। I think okay, ये इसको ये लाइसन की वजह से, ये एरर की वजह से हो रहा है आई थिंक। यस ये सर वो हम, लेकिन हम लोग भी सर जो इंस्टॉल किए रेबिट, हाँ, तो ऑन करते तो हम लोग का लाइसेंस नहीं दिखाता, ऑनलाइन ही रहते हैं, नेट ऑन रहता है। मैं हम मेरा भी नेट ऑन ही है, लेकिन ये जा नहीं रहा है ये। एक मिनट, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है क्या? सब आप टेम्पोररी फाइल एक बार डिलीट कर लो आप सारा। एक मिनट ना, ऑटोडेस्क का तो सब फाइल खोल दो। ये अजय से वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा शायद। गया अभी, हाँ। ओके, हाँ, टेम्पररी फाइल कहाँ से? सर विंडोज 8 दबाइए, हम्म, फिर उसके अंदर सर्च बार के अंदर आप विंडो 8 सर। हम्म, हाँ टेम उसके अंदर, हाँ हम्म, कंटिन्यू कीजिए सर। क्या कंटिन्यू करूँ? उसको कंटिन्यू करना था, विंडोज 8 दबा के टेम परसेंटेज सर्च कीजिए, वो आ जाएगा। परसेंटेज, परसेंटेज, टेम्प हम्म, परसेंटेज, डिलीट। सारा डिलीट कर दिया टेम्पोररी फाइल जितना है। जो नहीं है उसका स्किप कर दीजिए सर, कुछ फाइल नहीं होगी। हम्म, सिस्टम आपका स्लो है सर, इसी वजह से हो रहा है। हम्म, अभी दिख रहा है? अभी तो डिलीट अभी मोमेंट कैसा है, दिख रहा है क्या? नहीं सर, वही वही सिस्टम हो रहा है। आप कमांड दे रहे हो, वो आप उधर कमांड दे रहे हो लेकिन इधर लेट से दिख रहा है। एक मिनट, एक काम करता हूँ, इसको क्लोज करके वापस स्टार्ट करता हूँ, विंडो ओपन करके। तो शुरू से पहले आप सी ड्राइव क्लीन कर लेना आप, शायद एक अच्छा मिनट। चले। ओके, अब कैसा है, अब हो रहा है? हेलो?
यस सर। हेलो, अभी दिख रहा है यस मेरा? सर, यस Okay. सर। Okay. Okay. So this, if you have this type of floor and just consider you want to give the slope at this level. Okay. So you can just click this and you can just go here. So you can define here. Okay. So this side I want to keep up, right? 0, and this side minus. So minus 200. So in that case, you can add the point also. So if I select, so by default all corner has been selected, but I want to give the slope here also. Okay, so you can add this. You have option here, add point, right? So just click and you can just add the points here, then here, then here, and here, here. फिर सर वही हो रहा है। अभी अभी भी सर यस वही सर, अभी भी वही हो रहा है सर। यस सर। सर एक बार वो गूगल मीट का विंडो ओपन करना एक बार। उसमें वो 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं ना, उस पे एक बार क्लिक करना। हाँ, ये फुल नीचे स्क्रीन। हाँ, उसमें ट्रबल शूट एंड हेल्प पे क्लिक करना है, सेकंड लास्ट ऑप्शन। नहीं सर का सिस्टम ही स्लो, इसलिए नहीं ले रहा है। नेटवर्क हाँ, इश्यू वो तो सही नहीं। बोल रहे हैं। नहीं, सिस्टम अगर स्लो होता है तो मुझे भी स्लो होता ना। मेरा तो हाँ। स्मूथ चल रहा है। सिस्टम अगर स्लो होता तो मुझे भी तुमको एक्चुअल में जैसा सर प्रॉब्लम। हमें लग रहा था सॉफ्टवेयर में स्लो है, पर सर आप जैसे अभी क्लिक कर रहे हो ना, ये भी हमें सर लेट दिखाई दे रहा है। लेट दिखा है। हाँ, तो क्या है, वो मेरा सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा सिस्टम का प्रॉब्लम रहता तो मेरे को इश्यू होता ना। मैं सर मूव ये अगर कुछ करता तो मुझे टाइम लगता ना। तो आपको जो दिख रहा है वो क्या वजह है? इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, वैसा इंटरनेट ही का तो नहीं है। अभी ऊपर वाला जो ग्राफ है ना, हम्म, ऊपर वाला स्क्रॉल करना, ऊपर हम्म, स्क्रॉल, ऊपर वाली साइड का लेना था। ऊपर वाला किधर? यहाँ पे? हाँ, ये देखो, ये पूरा 0 एमएस, मतलब आपका नेटवर्क इश्यू तो बिल्कुल नहीं। ब्लू लाइन है ना, पूरा 0 एमएस पे। बराबर। सो नहीं, मुझे क्या लगता है सिस्टम तो स्लो नहीं है। अगर सिस्टम स्लो रहता तो मुझे दिक्कत होती ना। मैं अगर एक नहीं कमांड देता। आपका वो नीचे वाला जो ग्राफ है ना, इसमें देखो, जो कोई कोई जगह पे जो ऊपर गया 100%, यहाँ पे वहां पे वो सिस्टम, हाँ, ये बाकी तो सही चल रहा है। 50% तो चलता ही है। कॉल क्वांटिटी, ये सीपीयू यूज से क्या? हाँ, लेकिन नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं वो सॉफ्टवेयर जो है ना, ये रेविट है वो हम्म, सर मेरे में होता था। मैं इसलिए अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मैंने वो इशू सॉल्व करके मैंने हटा दिया हार्ड डिस्क, फिर लगाया दूसरा जाके। तब आप अगर ठीक चल रहा है तो फिर सर हम लोग की इधर दिक्कत हो रहा है। हम लोग का नेट भी ठीक चल अगर मेरा स्मूथ है, मैं यहाँ पे जो भी कमांड दे रहा हूँ ना वो क्विकली रिस्पॉन्स दे रहा है यहाँ पे। नहीं तो मेरा कोई प्रॉब्लम आता ना ऐसा। ना। हम लोग का सर इधर लेट से दिख रही है। दिक्कत ये है, हम लोग का भी नेट सही चल रहा है। मैं तो वाईफाई से ही कनेक्ट हूँ सर। मेरा भी वाईफाई है, नेट भी। एक्चुअल में सर आवाज तो बिल्कुल सही टाइम पे आ रही है। वो जो सर आप कमांड दे रहे हो ना, जैसे आपने बोला 4 पॉइंट्स हमें मतलब वो सेलेक्ट करने हैं, तो अब सर वो पहले सेलेक्ट होते दिखते नहीं है। फिर जब आप पूरा कंप्लीट सेलेक्ट कर देते हो तब अचानक से वो डिस्प्ले होता है। मतलब आवाज तो क्लियर आ रही है सर, पर वो उसमें लैग हो जा रहा है। एक आपका कोई शेयर करते क्या? हम स्क्रीन देखता हूँ मैं। किसी का, किसी एक का स्क्रीन शेयर करो ना। ओके, मैं करता हूँ सर। हाँ, करो। हुआ सर? अभी तक नहीं कर रहा है। देखिए मेरा तब तक मैं वो अजय को कॉल करके देखता हूँ वो क्या बोलता है। हुआ सर स्क्रीन? दिख रहा है अभी, एक मिनट। अब मैं दिख आपको कराता हूँ। एक मिनट।
मिनट मैं म्यूट करता हूँ, अजय का कॉल आ रहा है। ओके हेलो। उधर पर लैग नहीं ना हो रहा है समीर? लैग आप एक अभी सेकंड दोबारा बताएं, एक बार दोबारा कमांड करिए कोई यूज कमांड। कर रहे हो तो वो बता के यूज करो, मतलब वो कोऑर्डिनेशन में समझ आएगा लैग हो रहा है या नहीं। एक मिनट में कॉलम यूज करूँगा। सही आ रहा है आपका तो, हाँ सही आ रहा है, सही आ रहा है, आपका लैग नहीं हो रहा। हाँ, और स्क्रीन भी क्लियर दिख रहा है एकदम। क्लियर है, यस मतलब सब एकदम स्पीड वगैरह सब सही आ रही है, लैग हाँ नहीं हो रहा, आपका सही आ रहा है। हाँ हेलो। हाँ, आपका जो यस सर। क्लियर दिख रहा है, मुझे क्लियर समझ। हाँ लेकिन आप में हम लोग को दिक्कत हो रही है। ऐसा क्यों फिर? वो इशू हो सकता है तो सर। इसका स्क्रीन भी सर क्लियर दिख रहा है एकदम जो। तो मेरा वाईफाई का तो नहीं प्रॉब्लम कुछ? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। डेल के लैपटॉप में अगर आप रेविट इंस्टॉल कीजिएगा ना, हम्म। हाँ, मैं 2 बार इसको 3 बार आजमा चुका हूँ, वो आपका सिस्टम स्लो कर देता है। आप हार्ड डिस्क यूज अरे करके। भाई, मेरा अगर सिस्टम स्लो होता तो मेरे को भी दिक्कत होती ना। मेरे को नहीं नहीं, यहाँ पे फास्ट हो रहा है। मेरे वो ठीक है सर, लेकिन आपको तो दिखेगी, लेकिन हम लोग को जो दिख रहे हैं उतना आपको ज्यादा थोड़ा सा स्लो हाँ, आपका भी हो रहा होगा। इसमें एक सिस्टम का पॉसिबिलिटी सर इंटरनेट कनेक्शन की भी हो सकती है हाँ, सर। मुझे मुझे ना वही लग रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम का अगर प्रॉब्लम रहता तो मुझे दिक्कत होती ना। बराबर है क्या नहीं? मैं अगर कमांड देता तो मुझे रिस्पांस बाद में मिलता, तो मुझे ही प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आपको जो शेयर हो रहा है वो इंटरनेट का प्रॉब्लम है शायद। अगर सिस्टम का प्रॉब्लम होता तो मुझे ही तकलीफ होती ना, तो मुझे इश्यू होता वो। वो सर फिर इंटरनेट कनेक्शन की हो सकती है। हाँ, लेकिन मैं अभी स्पीड भी चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पीड भी अच्छा है यहाँ पे इंटरनेट का। क्या प्रॉब्लम है ये? एक मुझे 1 मिनट दो, मैं क्या करता हूँ, जगह चेंज करता हूँ, वो थोड़ा सा राउटर के पास है। अभी मैं थोड़ा सा इधर है लंबा, तो 1 मिनट दो मुझे। मैं देखता हूँ जगह चेंज करके, ठीक है? सर मैं अभी क्या करता अच्छा हूँ, सर अभी के लिए हम्म। मैं अपनी आईडी डेस्क से मैं कनेक्ट करो, मुझसे आप बता दो उसको अभी तक। फिर उसके बाद एनी डेस्क से सर कनेक्ट होता ना, हम्म। फिर उसके बाद तो उसके बाद स्क्रीन शेयर करके वो लोग पढ़ा देते हैं हम लोग, अगर पॉसिबल हो तो। स्क्रीन शेयर करके। हाँ एनी डेस्क एक मेरा एक सिस्टम। मिनट, 1 मिनट रुको, मैं एक ही मिनट दो मुझे, एक मिनट ओके होल्ड करो। ओके। अविनाश, तुमने खुद से इंस्टॉल किया है क्या ये सॉफ्टवेयर? हाँ मैंने खुद इंस्टॉल किया। तो प्रोसेस क्या है कुछ बताना। नहीं नहीं, मैंने वो क्या बोलते हैं, गेट इनटू पीसी, गेट माई पीसी जाकर मैंने वो डाउनलोड किया, और फिर सारा उसका दिया, तो पैच किया, पैच के बाद इंस्टॉल खुद कर लिया। फिर वो आपने हाँ लाइसेंस कॉपी लिया क्या उसका? नहीं, लाइसेंस कॉपी नहीं है। फिर तो वो 1 मंथ ट्रायल आया होगा ना कुछ? नहीं, मेरा 1 मंथ ट्रायल भी नहीं है। तो क्रैक किया क्या? वो हाँ क्रैक वर्जन ही है, तो वो सीरियल नंबर रहता है ना, उसके डाल के फिर हो जाता है। अच्छा ठीक है, अपना जो ग्रुप है उस पर एक बार वो प्रोसेस थोड़ा शेयर कर देना। अरे आप फ्री हो, जब फ्री होगे मुझे मैसेज कर देना। कल मैं कहीं ठीक है जाने वाला नहीं, कल प्रैक्टिस करूंगा मैं, तो मैं एनी डेस्क से कनेक्ट करके आपको बता दूंगा वो सारा। ठीक है चलेगा।
अजय सर ने इंस्टॉल करके नहीं दिया है किसी को? नहीं, मैंने खुद इंस्टॉल किया। मतलब हमें क्लास मेरे में को आज की डेट दी है, मेरे को आज की डेट दी है मैंने भी मैसेज किया था, अरे, लेकिन सर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया अभी तक। अगर हम डाउनलोड करते हैं ना तो वो क्रैक से हमारा सिस्टम हार्म हो सकता है। नहीं तो कोई सर, और डाउनलोड एक मिनट, सर भी जो आपको फाइल भेजे ना वो भी डाउनलोडेड फाइल ही है। वो चलेगा, लेकिन हम हमारे सिस्टम में नहीं करना चाहिए। मैं तो आज से नहीं, बहुत बार पहले कितना मैंने बड़ा भी किया है, लेकिन बेटर है हम कोई और सिस्टम से डाउनलोड करके उसमें से लें। ये तो फर्मवेयर को हार्म होता है। हो सकता Anyways, है। अजय सर का वेट करते हैं, पता नहीं। सुरेखा जी ने तो शायद इंस्टॉल कर रखा है। Hello. Hello. यस सर। Yes, I will share again my screen. पहले तो नहीं होता था प्रॉब्लम, अभी हो रहा है। फर्स्ट डे तो नहीं हुआ था सर, और मॉर्निंग में भी इतनी नहीं थी, मॉर्निंग में भी सर थोड़ी थी वो, फिर वो ठीक हो गई थी। अभी आज ज्यादा कर रहा था सर शाम को। अभी देखो, दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन? स्क्रीन यस सर। ओके, सो अभी अब फिर भी बेटर है सर। बेटर है। यस सर। और बाकी लोगों को ले, अविनाश कुमार सिंह, आपको दिख रहा है अभी? स्क्रीन दिख रहा है सर अभी तो। नहीं, मूवमेंट दिख रहा है क्या? अच्छा, ये वाला कर्सर का दिख रहा है। मूवमेंट हाँ, वो जूम कर रहे तो वो दिख रहा है। स्मूथ दिख रहा है अभी? पहले से बेटर है, फुल्ली स्मूथ नहीं है सर। ओके ओके, ठीक है, चलेगा सर ठीक है, इतना चलेगा सर। ओके। अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम आए तो बोलिए, तो वापस कुछ करते फिर। Okay, so you can see I want to give the slope at this level, right? So you can add the slope point here. Then similar, if I select and go to here add points, so you can just add at some interval as per your requirement, here and here, then here, here. Okay, then you can add here your inputs. So just click and go to here, modify sub element. So this is my 200, right? So you can just give here some minus 85, because your slopes start from this point to this point. Okay, so as per your requirement you can just add here minus 175, okay, then minus 165, like that. Okay, then you can add also here. So what happened, your slope will be maintained in this direction and in this direction, right? So if you see here, so you can see, right? So if you give each and every, so you can create a slope here. So purpose for sharing this detail, if you want to give the slope to the slab, so you have option. So you should go with that structural floor slab, not a foundation slab. Okay, so for example, I will just take any one example again. Just go to the structural slab here, right? And I will add here, and just consider this is my truck bay. Okay, and here is a small opening for the sump, right? So I have added this, right? So if you see here, so this is my slab and I have added the opening. And just consider here is the vehicle is stop and just filling the fuel or any chemical, so those chemical is split on this bay and just drain out in this sump. Okay, but you need to give the slope here, right? So how to give slope? So just select and you can see here modify sub element. So you have already point, but if you want to add some points, okay, as per your requirement, then you can use this add point option and then you can add.
Okay, so if you see, this is 0, this is 0, this is 0, this is 0, right? And this level is, we need to model down here. So just consider this level is minus 100 mm below. So you need to give the slope here minus 100 at all 4 location, minus 100, and here also minus 100, like that. So you can, once you're done, so just click modify or escape. If you look at 3D view, so you can see your slab is looks like. If I take a section right through this direction up to here and go to the view, so you can see, right? So you can see I have given the slope, and here you can just add your wall sum, the wall sum and just slab. Okay, so you need to give here higher point here and lower point here. So if you want to give the flat base of this slab, so just select and go to the edit type, go to edit here and just click here variable slope. Okay, then apply and okay. So you can see, and after that you can add here, suppose I want to add a wall here, so sum here, so just consider new and don't save. Okay, so this is your higher point like that, and then after that you need to add your sum like that. So I will show you how to add the wall here like that. So this is slope. So the purpose for sharing, if you give the slope to the slab, so you should use this option. And where you need to use this option where you don't want to give the slope, for example raft, okay, foundation raft. So in that case you can use this slab. Then combined footing, right? So if suppose if I go to here and I have designed the combined footing for two column. Okay, so instead of say isolated footing, I have designed here combined footing. So you should use this category. So go to the slab and foundation slab here, right? And just consider my toe is 500 mm from the edge of the column here. So I will use this option 500. I have given the 500 offset, and I will use this rectangle. So if I click, so yes, so you need to give here 500 and just select. So you can see if I have select this corner point, but my slab edge will be start from this point because I have given the 500 offset. Okay, so you need to select this point also, right? Click here, okay. And if you look at in 3D view, so you can see I have given this combined footing. Okay, so that's the purpose for this foundation slab. Okay, got it? Everyone can see smoothly now or lagging again? सर अभी भी हो रहा है सर, हो रहा है सर लैग। सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, स्टेप भाग जा वो रहा है कमांड एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही, मतलब ऐसे सर। थोड़ा सा लैग हो रहा है ना, इसलिए। सर आपके पास इससे पहले वाला जो रिकॉर्डिंग सेशन होगा दोनों का ना सर, सुबह वाला और आज, वो डालिएगा, ये रिकॉर्डिंग सेशन शेयर मत करवाइएगा। अच्छा, क्योंकि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम लोग उससे ही देखेंगे फिर। अभी इंटरनेट का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है यार? ठीक सर है, एक काम आप एक कीजिए। बार सर खुद एक बार सर रिकॉर्डेड वाला ये देखना सर, फिर आपको समझ आएगा कि मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, सर, प्रॉब्लम तो है, मुझे पता है प्रॉब्लम हो रही, लेकिन अभी क्यों प्रॉब्लम हो रही ये, ठीक है एक काम करते हैं, आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं, वो अजय से मैं बात करता हूँ क्या इशू है, ठीक है? सर आपका एसएसडी है या हार्ड डिस्क है? एसएसडी है। नहीं ये सर, तो नहीं आना चाहिए। नहीं सर, एसएसडी रहता तो सर ये करता ही नहीं आप पे। नहीं हार्ड डिस्क है, 11 जनरेशन है SSD। सर न्यू परचेस किए थे क्या हाल में? हाँ न्यू परचेस किया है। तब तो हार्ड डिस्क होगा सर, क्योंकि 1.5 साल हो गया उसको। 1.5 साल हो गया सर, तब तो हार्ड डिस्क ज्यादा चांसेस है।
SSD अब इधर आ रहा है। अरे ऐसे इसमें कुछ ज्यादा भी नहीं, ऐसा कुछ रखा भी है बहुत। नहीं सर, ये रिवेट सॉफ्टवेयर बहुत हेवी सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा है वो। हम्म, नहीं अगर सॉफ्टवेयर का इशू रहता तो मुझे तकलीफ होती ना, मैं तो स्मूथली काम कर रहा हूँ। नहीं सर, वो अभी आपको सॉफ्टवेयर में नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन ये हम्म, हमको जो दिख रहा है वो गूगल मीट से दिख रहा है ना, तो हम्म। एक साथ वो एक मल्टीपल एक काम सॉफ्टवेयर जब करो, चलता है एक इसलिए मिनट शायद खाली, कुछ होगा। एक सुनो ना, एक मिनट होल्ड करो, मैं अनिल से बात करता हूँ, अगर इनको भी अगर सेम प्रॉब्लम है उनके स्टूडेंट को तो हमें वो कुछ बताएंगे। मुझे एक मिनट दो, मैं बात करता हूँ उनसे। ओके सर। Okay, so Pragya will join us. So just she will confirm what is the issue. ओके सर। आप सभी को पूरा इशू आ रहा है ना? यस सर। सर अभी यहाँ पे मैंने हैंड रेज भी किया ना सर, तो हम्म। आपके इसमें बहुत लेट दिख रहा है। मैंने हैंड रेज करके पूरा क्लोज भी किया, उसके बाद आपके यहाँ पे दिख रहा है। हम्म, आप ट्राई करके देखो अविनाश एक बार। इसमें जो तुरंत दिख रहा है। अभी आ रहा है वो चल। हेलो प्रज्ञा। हेलो। हेमा आपको भी प्रॉब्लम आ रहा है? हेमा, देन केतन, Yes, sir. समीर वर्मा, सुलेखा जी, आपको भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. I can't follow you. I'm not getting what you're doing and what is happening like that. यस। हेलो प्रज्ञा। हेलो प्रज्ञा। ये देखो यहाँ पे अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये अगर इनको सिलेक्ट किया तो अभी आ रहा है यहाँ पे।
ये मोमेंट तो अच्छा है। देखो अभी यहाँ पे मैं, मेरा कर्सर कहाँ पे है और प्रीव्यू में देखो आप, तो बराबर आ रहा है। हेलो प्रज्ञा, सर आई थिंक ज्वाइन नहीं किए प्रज्ञा। नहीं है ये अनिल मालिक, यूनाइटेड ज्वाइन। नहीं है सर, वो कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हैंड रेस करके मैंने फिर से डाउन किया ना, तो आप इसमें बहुत देर बाद दिख रहा है वो। सर मैंने इसी जूम पर मैंने स्क्रीन शेयर किया और रेविड भी चलाया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अभी देखो कैसा आ रहा है। नहीं मुझे क्या लगता है ये रेविट का प्रॉब्लम है, ये जो हाँ रेविड का ही एरर प्रॉब्लम है। एरर आ रहा है ना, उसकी वजह से शायद वो। देखो अभी आ रहा है क्या बराबर, क्या टाइम लग रहा नहीं है? टाइम लग रहा है सर। सर आज का सेशन यही स्टॉप करते हैं। हाँ वही करते हैं अभी, वो 1 मिनट ऊपर क्या कंफर्म करने वाली है, क्या इशू है। वैसे तो सर ऑटो कैड के समय भी हो रहा था, लेकिन इतना नहीं था, वो बहुत कम था उस समय। हेलो, हाँ हो, बरं ठीक आहे चालेल। हाँ आई थिंक उनका, उनके यहाँ से अगर कनेक्ट कर रहे हैं और उनको इंटरनेट का इशू है बराबर, तो आई थिंक इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये जो कुछ यस सर, सेटअप, हाँ, ये जो वो सेटअप होस्ट कर रहे, है, हाँ वो होस्ट होस्ट कर कर रहे हैं। रहे हैं ना, बराबर यस बराबर। सर, हाँ यस सर। सर, वो दिक्कत हो सकती है सर। हाँ यस सर, ये यस प्रॉब्लम, ये ये प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है क्योंकि होस्ट वो कर रही है। यस सर, यस। यस यस। यस अविनाश जी, बराबर है क्या? मुझे नहीं पता साहब, देखो मैं तो आज बट सर मैं बट सर एक्चुअल में अविनाश जी का तो जब उन्होंने किया तब सर सही चल रहा था सर, जबकि होस्ट तो तब भी उन्हीं का था, तो सर हाँ वो सर, पॉसिबिलिटी में भी ये हाँ मैं अभी भी स्क्रीन शेयर प्योरली। कर सकता हूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो तो। ओके एक्चुअली क्या हुआ, वो अभी घर पे है ना, तो घर का उनका इंटरनेट है। अगर ऑफिस में रहते तो वहां पे इंटरनेट का इशू नहीं है, तो मुझे लग रहा है देखते अभी क्या है। मुझे तो दिख रही है सर आपकी स्क्रीन परफेक्ट एकदम। और ये मोमेंट वगैरह ये हाँ दिख, वो भी विजिबल है सर। अभी क्या इशू है फिर? इनको नहीं दिख रहा है, इनको लैगिंग हो रहा है। अगर कुछ कमांड देता हूँ तो बाद में दिखती है उनको, सम सेकंड आफ्टर सम सेकंड। ओके सो क्या करते हैं आज का, स्टॉप करते हैं क्योंकि इशू हो रहा है और उनको पता भी नहीं चल रहा है क्या सर, चल आप रहा उनको नहीं एक सर एक कमांड मिनट एक्सप्लेन करके दिखो ना एक, तो उनको सर भी सर समझ आएगा अब कि आप इनको पॉइंट डिफरेंस सिलेक्ट पता, करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से, इनको डिफरेंस पता चल जाएगा क्या है। इशू हो रही है। ठीक है। नहीं सर, आप एक बार कोई कमांड आप एक एक्सप्लेन बार कर सर दो। कोई कमांड देके देखते, फिर हाँ उन्हें पता चल हाँ, जाता सर। पॉइंट चलेगा। सिलेक्ट करके प्रज्ञा दिखाओ आप लोग। जस्ट ऑब्जर्व दिस कमांड, so I will just yes, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, दिख रहा है आपको? यस सर, मला दिसतंय ते एकदम परफेक्ट। सर एक बार सर, आप बोल के डिक्टेट करके बताइए करो सर, ना। तब हाँ तब आप सर Okay, बोल पता रहे हो कि चलेगा। ये पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो okay, हमको okay, दिखता बाद में ऐसे। okay. Yeah, I will just select this slab and go to edit boundary here, and I will just add a small opening and just close and just go again here and just add this point here, modify and just go here and just add here minus 200 and here also minus 200 at all corners of this sum. So just add again 200 and add here minus 200
Okay, so if I fill all this value, just escape, and you need to check in 3D model. So your slab looks like. Okay, Pragya. हो सर, मला परफेक्ट दिसलं. तुम्ही -200 200 -200 असं घेतलं ना सर. ओके, मी जे आता व्हॅल्यू टाकले ते तुम्हाला क्लिअर दिसले माझे? हो हो, एकदम परफेक्ट दिसला. -200 200 -200. सर लेकिन दिख इस रहा है केस में परफेक्ट, लेकिन आपका लैगिंग 200 बोलने के हो रहा है, बाद, हाँ आप लैगिंग जब हो रहा है। एक्चुअल में सर वो तो सब हमें भी समझ आ रहा है कि आपने कमांड क्या दिए, पर वो मतलब इसके आपके बोलने से सिंक नहीं हो रहा सर। वो वहाँ हाँ, एक्शन लैग कर जा रहा है सर। आप जब सेकंड पॉइंट में 200 डालते हो तो हमें फर्स्ट पॉइंट का दिखता है। फर्स्ट पॉइंट। यस सर, ये दिक्कत। हाँ, ये हो रहा है। तो आप कमांड ऊपर जाके कोई सिलेक्ट करते हो तो हमें एग्जैक्ट समझ में नहीं आता है कि आप कहाँ कौन सा कमांड सिलेक्ट कर रहे हो। टेलीकास्ट थोड़ा लेट हो रहा है फिर। ठीक आहे, चलेगा. एक काम करते हैं, आज का स्टॉप करते फिर. प्रज्ञा, आजचं सेशन त्यांना काही रेकॉर्ड सेशन टाकू नका, कारण की काय त्यांना इश्यू सुरुवातीपासूनच होता आजच्या सेशनला. सर मे बी मग तो तुमच्या पीसी मध्येच प्रॉब्लेम असेल, कारण नाही. की नेटवर्कचा तर इश्यू नाहीये. मग माझ्या पीसी मध्ये असतं तर मला इश्यू आला असता ना. म्हणजे माझं जर सॉफ्टवेअर स्लो असतं तर इथंच मला स्पीड अफेक्ट झाला असता ना इथं मला. पण मी एक स्मूथली करू शकतो इथं. अजयला कॉल केला होता मी, पण तो कुठेतरी बाहेर आहे वाटतं. अनिल सरांना पण केला, ते पण उचलत नाहीये. प्रज्ञा, आप ये इस सेशन का दूसरा क्लास जो हुआ होगा ना, तो आप उसका वीडियो लिंक में शेयर करना, और सुबह का भी और शाम वैसे वाला नहीं भी. होता ना, सेम टू सेम सेशन नहीं होता ना, तो तभी तो मैं एक बार सर से बात करके डाल दूंगी. नहीं, मेरा बात सुनिए. अगर सेम टू सेम नहीं होता है तो एक काम कीजिएगा, एक सेशन अरेंज कराइएगा इस क्लास के लिए अलग से. ये हो ओके सकता ना? ठीक है, चलेगा. वैसे आज का जो सेशन है ना, हम पोस्टपोन करते हैं. ठीक है. यस सर. ओके ओके, ठीक है. आज के दिन रुकते फिर. अगर कुछ इशू है, मेरा जो रेविट का जो भी एरर भी आ रहा है, मैं आज से वो सॉर्ट आउट करता हूँ फिर. आप एक बार सर इसका रिकॉर्डेड सर आप पर्सनली खुद के लिए देख सकते हैं, ताकि सर आप फिर डिस्कस कर सकें कि एक्चुअल में क्या दिक्कत हो रही है. सर हमें तो पता चल रहा है सर, आपको भी वो एग्जैक्टली पता चल जाएगा सर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आप एक बार वो देख के फिर आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं. यस सर. चलेगा चलेगा, मैं अनिल सर से बात करता हूँ और रिजॉल्व करता हूँ. ठीक है. यस सर. ओके ओके, थैंक यू. गुड नाइट ऑल. सो थैंक यू सर. गुड नाइट सर. यस, गुड नाइट. थैंक यू सर. थैंक यू. सर. थैंक यू.